first of all, good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you can see that in the last three videos, we completed the chapter number 8. And according to the new syllabus released by the CBSE for the session 2020 and 21, you can see that the chapter number 9, that is a redemption of debenture, removed from the syllabus. So after the completing the chapter number 8, now we will move to the chapter number 10, because chapter number 9 will be removed from the syllabus due to the COVID-19 situation. So our new chapter is chapter number 10. Before the reaching the chapter number 10, I want to tell you some of the important topic, some of the important things related to the chapter number 10 is that is your accountancy syllabus divided into the two categories, that is a part A and part B. Part A consists of the two volume 1 and volume 2. In the volume 1, you can see that the accounting treatment of not-for-profit organization and the accounting for partnership firm. In volume 2, you can see that we record the transaction related to the companies. In this volume, you can see that we study the two important chapters, that is issue and forfeiture of share and the issue of debenture. And the redemption of debenture will be excluded from your syllabus. Now we will move to the part B. The part B का जो नाम है वो है financial statement analysis. The name of the part B, if you can see that the book of your part B, this is your book of the part B suppose. So this is a part B book and आप अपने part B book के title देखोगे तो your title is of part B book is financial statement analysis. So the part B includes the financial statement analysis. यानी पूरे part B में आपको financial statement analysis के बारे में समझना है और इस पूरे part B में आपके कई chapters included हैं. So in the part B of accountancy, the name of the part B is financial statement analysis, which include the 5 chapter, which include the basically 5 chapter. The first chapter which are included the part B, that is the first chapter, that is chapter number 10, is financial statement. The 10th chapter of part B, that is financial statement of company. If we are talking about the chapter number 11, so the chapter number 11, the name of the chapter number 11 is financial statement analysis. That is financial statement analysis. If we are talking about the chapter number 12, so the chapter number 12 is tools for financial analysis. Okay, and the chapter number 13 is accounting ratio. The chapter number 13 is accounting ratio. And the last but not the least, it is a very important chapter of part B, that is cash flow statement. So you can see that in the part B we studied almost 5 chapter. हमें 5 chapter discuss करने हैं part B में. The first chapter is financial statement of company. The second chapter is financial statement analysis. The third chapter is tool for financial analysis. The fourth chapter is accounting ratio, and fifth chapter is the cash flow statement. So one by one, I will start from the chapter number 10. Thereafter, chapter number 11, chapter number 12, 13, and 14. If we are talking about the difficulty level of the chapter, अगर हम chapter के difficulty level पे बात करें, so we can see that the chapter number 10 and 11 and 12 are too short and easy to understand. चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 की बात करें तो ये चैप्टर जो हैं वो छोटे भी हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी काफी कम है, यानी ये बहुत इजी चैप्टर में काउंटेबल होते हैं, इसलिए इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी कम होता है. एंड यू नो वेरी वेल इन द पार्ट बी आपके क्वेश्चन भी काफी कम आते हैं. पार्ट बी में अगर हम काउंटेबल करें तो इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी कम होता है, जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था
कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग इनके मार्क्स पे नहीं जाएंगे, बट हम आपको ये बता दें कि चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 बहुत छोटे चैप्टर्स हैं और इन पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी चैप्टर नंबर 13 एंड 14, ये दोनों चैप्टर थोड़े से लेंथी हैं और थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, और इनका लेवल भी थोड़ा अच्छा है। अच्छा मतलब मॉडरेट लेवल के हैं। और अगर आप इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो ये आपके लिए टफ चैप्टर में भी काउंटेबल हो जाता है। If we are talking about the nature of the part B, so the part B you can see that they are basically 5 chapter, and all the five chapter which are included the very important heading, that is financial statement analysis. यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं इस पूरे पार्ट बी में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग अबाउट द नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी यू कैन सी दैट सोल पार्टनरशिप किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देयर आफ्टर इट प्रिपेयर द बैलेंस शीट। If you are talking about the partnership firm, so you know very well partnership firm किस तरह से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्ड हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट through the profit and loss appropriation account, partners capital account, partners loan account, and the balance sheet. When we move to the financial statement of the company, यानी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ऐसे ही नहीं बन जाता। इसके लिए स्पेसिफिक रूल दिए हैं विच आर गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनके पूरे प्रोविजंस गिवन किए गए हैं कि एक कंपनी किस तरह से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी, फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करना है, और एनालाइज के कौन कौन से टूल्स हैं। टूल्स तो बहुत सारे हैं, उसमें से दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज की, रेपुटेड कंपनीज का एनालाइज करना है, एनालिसिस मींस यू नो वेरी वेल कि जब हम लोग 11th में पढ़ते थे तो यू द अकाउंटिंग प्रोसेस, द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, समराइजिंग के बाद एनालिसिस, एनालिसिस। एनालिसिस में हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे। उसी तरह कंपनी का भी हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज मींस कि वी टेक द इन रिलेटिव इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमें पता चल गई, बट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम उस पर कमेंट कैसा करें कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, कंपनी की इनकम कैपेसिटी कैसी है, कंपनी अपने सेल्स पे कितना प्रॉफिट कमा रही है। सो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वी एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना है, if we are talking about the analysis of the financial statement, so we have a sufficient knowledge about the financial statement। अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज नहीं होगी तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं कर सकते। अब एनालिसिस करने के कई टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो कॉमन साइज, कंपैरेटिव, रेशियो, एज वेल एज कैश फ्लो। सो दे आर various kind of tools and techniques by which we can easily analyze the financial statement of the company. So let's we move to the first chapter of part B. The first chapter of part B is financial statement of company. So the first chapter is financial statement of company. Financial statement of company. The chapter number 10. So what is a financial statement of company? So first of all, I want to tell you something about the theoretical topics regarding the financial statement. Okay. So please note down in your copy. According to Companies Act 2013, according to Companies Act 2013, financial statement normally refers to the statement. Financial statement refers to the statements, namely उनके नाम क्या क्या है, namely number 1 बैलेंस शीट,
Number two, statement of profit and loss account. Statement of profit and loss. And number three, notes to account. Notes to accounts. And number four is cash flow statement. Please note down the full name, that is cash flow statement. So if we are talking about the definition of the Companies Act, definition of the financial statement according to Companies Act 2013, so you can see that according to the Companies Act 2013, financial statement refers to the statement, namely मतलब वो सारे statement जिनके नाम ये हैं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैटेगरी में रखते हैं. सो दे आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, दैट इज बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, and number third, notes to accounts, and number four is cash flow statement. So this is the first relevant theory related to this topic. Now if we are talking about the second heading, the second heading is financial year. So please note down one by one in your copy. The second is a financial year. You know very well, every company and every organization adopt a financial year. Financial year, it means the year from which to from today I will calculate the profit or loss of the particular firm. Yani with the help of the financial year, company easily create a is easily calculate their profit at the end of the particular period. So if we are talking about the financial year, so according to Companies Act 2013, all companies should have all company should have a uniform should have a uniform financial year, uniform or financial year, financial year which is from 1st April to 31st March every year. Okay, so what is financial year? Financial year means according to Companies Act 2013, all companies should have a uniform of financial year. यानी उनका एक फाइनेंशियल ईयर यूनिफॉर्म रहेगा जो सारी कंपनी अडॉप्ट करेंगे. यू नो वेरी वेल, कंपनी कब से कब तक अपना फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करती है? हर साल के 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल इज द ओपनिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड 31st March is the closing date of the accounts. So these are the definition of the financial year. The next one is a important topic related to this topic is the format of financial statement of a company. Format means how company prepare the financial statement. So if we are talking about the next topic, the next topic is format of a financial statement of company. So there are basically two formats which you have to be discussed in this chapter. The first one is the format of balance sheet of a company. It means how company prepare its balance sheet according to Companies Act 2013 as per Schedule 3 Part 1. As per Schedule 3 Part 1. Okay. The second, which is very important format, that is statement of profit and loss account. Statement of profit and loss. So कंपनी आपको इस पूरे चैप्टर में दो फॉर्मेट डिस्कस करने हैं. पहला फॉर्मेट डिस्कस करना है, दैट इज अ बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1. एंड द सेकंड फॉर्मेट जो आपको डिस्कस करना है इस पूरे चैप्टर में, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड द फॉर्मेट इज गिवन बाय द Companies Act 2013 Part
to Schedule 3 also. Schedule 3. So those two parts have to study by you in this chapter. यानी आपको पहले ये सीखना है कि कंपनी अपना बैलेंस शीट कैसे बनाती है, उसका फॉर्मेट क्या है, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का पार्ट टू, अकॉर्डिंग टू पार्ट टू शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनी अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करती है. So let's we take the some of the important short format of balance sheet of the company. So if we are talking about the balance sheet of the company, so you can see that in the last few classes we already discussed this topic also, कि how company prepare the balance sheet. When you see the topic of issue of debenture as a collateral security, so basically you can see that how company prepare the balance sheet. So company prepare the balance sheet in a vertical form, not in horizontal form. अगर कंपनी के बैलेंस शीट को आप देखोगे तो कंपनी कभी भी अपनी बैलेंस शीट हॉरिजेंटली नहीं बनाती, वर्टिकली बनाती है. सो वर्टिकली यू कैन सी दैट द टू कॉलम ऑफ अमाउंट, one column for notes to accounts, and the first is a particulars. So particulars, note number, current year amount and previous year amount. Current year means current year में उसकी क्या वैल्यू है और प्रीवियस ईयर में क्या वैल्यू थी. सो कोई भी कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाती है तो इस फॉर्मेट में बनाती है. द फॉर्मेट इज वर्टिकली फॉर्म. एंड इसमें जो पहला होता है, पहला साइड जिसे हम बोल सकते हैं, पहला हेड बोलते हैं, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी. ओके, एंड इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी दे आर बेसिकली three heads, that is the first one is a shareholder fund. The first one is a shareholder fund, holder funds. Number two, number second head is share application money pending allotment. Share application money pending allotment. Number third will be non-current liability. And number four is a current liability. So I will give the each and every values in the balance sheet, and thereafter we total the liability side or equity and liability side of the balance sheet of the company. So this is a total. So the second side of the balance sheet of the company is assets. And in the asset side, there are basically two heads. The first one is a non-current assets. Non-current assets. Number second will be current assets. So this is a full format of the company's balance sheet in a short format. This is the short format. अब इसमें भी कुछ सारी चीजें होती हैं. जैसे if you are talking about the shareholder fund, so you can see that equity and liability में कितने heads हैं? 4. Assets में कितने heads हैं? 2. So if you are talking about the 4 heads of equity and liability, so shareholder fund में भी कई सब topics होंगे. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में भी कुछ सब टॉपिक्स होंगे. नॉन करंट लायबिलिटी में भी कुछ चीजें होंगी और करंट लायबिलिटी में भी कुछ चीजें होंगी. सो हम ये नहीं कह सकते कि बैलेंस शीट कंप्लीट है. इट इज नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट. इट इज अ शॉर्ट टाइप ऑफ द बैलेंस शीट विच आर प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी. So you can see that how company prepared the balance sheet of its company. यानी कंपनी किस तरह से अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है. और इस हेलो सर. ओके सर. यस यस सर कर दिया सर. So this is a format of the balance sheet. As you can see that the heading is schedule 3 for preparing balance sheet and statement of profit and loss. This is a balance sheet and profit and loss. Balance sheet and statement of profit and loss of a company must be prepared as per the format given in the schedule 3. The schedule 3 does not
ऑफर एनी हॉरिजेंटल फॉर्मेट, याद रखिएगा शेड्यूल 3 कंपनीज का कोई भी हॉरिजेंटल फॉर्मेट नहीं प्रोवाइड करता. द न्यू वर्टिकल फॉर्मेट इज एन फॉलोज द पार्ट वन. दो पार्ट में फॉर्मेट बनता है. द पार्ट वन विच आर रिलेटेड टू द फॉर्म्स ऑफ बैलेंस शीट एंड पार्ट टू विच आर रिलेटेड टू द statement of profit and loss. So first of all, company write the name of the company and thereafter balance sheet as a date. As a date means as at means किस date को आप balance sheet prepare कर रहे हो. And you can see that there are basically four column in each of the every balance sheet. The first column which are related to the particulars, the second column which are related to the note number, third one is a figure as at the end of current reporting period, and number four column is figures on at the end of the previous reporting period. यानी कि फर्स्ट थर्ड कॉलम में आप करंट ईयर की वैल्यू लिखोगे और फोर्थ कॉलम में आप लोग प्रीवियस ईयर की वैल्यू लिखोगे. So you can see that the first heading is equity and liability. In this, the first heading is shareholder fund. Shareholder funds में कितने सब heads हैं? The three things, that is share capital, reserve and surplus, and money received against share warrants. याद रखिएगा कि shareholder funds में one by one I will take the short term. If we are talking about the first uh, side of the balance sheet, that is equity and liability. So in the equity and liabilities, they are basically four heads, but we are talking about the first head, that is shareholder fund. So in the shareholder fund, company record the information relating to the first one is a share capital. The second information which are related to the reserve and surplus, reserve and surplus. The third one is a money received against share warrants. And number second heading, you can see that the second heading will be share application money pending allotment. इसमें कोई चीज नहीं होती है. Money received, money sorry, share application money pending allotment. Number third one will be non-current liability, non-current liability. So these are the main head. In the non-current liability, you can see that they are basically four heads. They are basically four subheads. That is, the first one is a long-term borrowing. The first one is a long-term borrowing. Number second will be deferred tax liability. Number C will be other current assets, other long-term liabilities, and long-term provision. Other long-term liability, and number D will be long-term provision. Okay. Okay, so this is a first side of the balance sheet as of the companies according to Companies Act 2013. So you can see that there are basically four main head of the equity and liability side. The first head will be shareholder fund. Second head is a share application money pending allotments. The third head is a non-current liability, and the fourth head is a current liability. And you can see that each and every head contains the various kind of subhead.
So in the shareholder fund, the first head of the equity and liability side, the first subhead is share capital. Second will be reserve and surplus. Third will be money received against share warrants. If you are talking about the second head of the equity and liability, that is share application money pending allotment. The third main head of the equity and liability side, that is non-current liability. Under the non-current liability, there are basically few heads, that is long-term borrowing, deferred tax liability, other long-term liability, long-term provisions. And the last but not the least, the fourth head of the equity and liability side, that is short-term borrowing, trade payables, other current liability, short-term provisions. बात यहीं खत्म नहीं होती है. अब आप जितने भी हेड्स देख रहे हो उसके अंदर आप कितनी चीजें देख रहे हो. अब इन सारी चीजों में भी कई सारी चीजें होंगी. जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में कंपनी क्या रिकॉर्ड करेगी? रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड करेंगे? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स में कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड करेंगे? उसी तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कंपनी क्या रिकॉर्ड करेगी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में क्या रिकॉर्ड करेगी? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में कंपनी क्या रिकॉर्ड करेगी? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या रिकॉर्ड करेगी? हर हेड में कंपनी क्या रिकॉर्ड करेगी और रिकॉर्ड करने का तरीका कैसे होगा? हाउ कंपनी रिकॉर्ड द ईच एंड एवरी अमाउंट, एंड यू कैन सी दैट द फॉर्मेट ऑफ द कंपनी. आपने कंपनी का फॉर्मेट देखा, तो अगर आप देखते हो शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो आप शेयर कैपिटल को सीधे 1 लाख रुपए लिखोगे और उसका वर्किंग नोट नीचे सेपरेटली शो करोगे. ये हम अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में भी समझाएंगे कि हाउ कंपनी प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द हाउ कंपनी प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट. उसमें ज्यादा रफली काम नहीं होता है, उसमें सारा कुछ फेयरली काम होता है, और जितना रफ वर्क होता है वो कंपनी सेपरेटली नीचे नोट्स टू अकाउंट के रूप में प्रेजेंट करती है. कंपनी कैसे प्रेजेंट करती है उसको हम लोग समझाएंगे. पहले हम लोग बात करते हैं शेयर कैपिटल की. द फर्स्ट हेड ऑफ द कंपनी, दैट इज शेयर कैपिटल. सो when we are talking about the share capital, so you know very well what is the share capital. The capital received on share, which is known as share capital. When a company issued the share to the public and received the money, this is known as the share capital. Okay, so in the share capital, company record each and every information very carefully. अगर हम कंपनी की शेयर कैपिटल की बात करें, तो शेयर कैपिटल में कंपनी क्या रिकॉर्ड करेगी? अब मैं आपको बता दूं, मैं अब हर एक चीज डिस्कस करूंगा. पहले मैं शेयर होल्डर फंड पे डिस्कशन करूंगा, उसके शेयर कैपिटल में क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, फिर इसमें क्या आएगा, इसमें इसके इस हेड में क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के हेड में क्या आएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के हेड में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के हेड में क्या आएगा. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. जैसे अगर एग्जाम में पूछ लिया आपसे कैपिटल रिजर्व किस साइड जाएगा, तो आपको क्या बताना होगा? फर्स्ट यू गिव द इंफॉर्मेशन कैपिटल रिजर्व विल बी शोन in the equity and liability side under shareholder fund heads. The subhead will be reserve and surplus. Please listen carefully. Capital reserve is a reserve, तो वो किस में जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा. लेकिन आप एग्जाम में आंसर कैसे दोगे? आप आंसर दोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी के शेयर होल्डर फंड के रिजर्व एंड सरप्लस, यानी यू गिव द टोटल एड्रेस ऑफ द ईच आइटम. एग्जाम में इस पे कई क्वेश्चन आते हैं 2-3 नंबर के, कि यू विल गिव द एग्जामिनर गिव यू टू द आइटम्स. आपको आइटम दे देता है कि कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, बताइए कहां रिकॉर्ड होगा कंपनी के बैलेंस शीट में. तो आप एड्रेस पूरा लिखोगे. एड्रेस कैसे लिखोगे? ये किस में आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस के किस में, रिजर्व एंड सरप्लस किस में आता है? शेयर होल्डर फंड में. शेयर होल्डर फंड किस में आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी में. एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं आपको, ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं. दैट इज बिल्स पेबल. अब बिल्स पेबल का एड्रेस क्या होगा? बिल्स पेबल किस में आएगा? शेयर होल्डर फंड में नहीं, इसमें नहीं. नॉन करेंट लायबिलिटी है. व्हाट इज नॉन करेंट लायबिलिटी? द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. नहीं आएगा. कि करंट लायबिलिटी में आएगा? यस, बिल्स पेबल इज अ करंट लायबिलिटी. तो बिल्स पेबल किस में आएगा? करंट लायबिलिटी. अब करंट लायबिलिटी के किस में आएगा? ध्यान से देखो, करंट लायबिलिटी के किस में आएगा? ट्रेड पेबल में आएगा. So the address of bills payable is trade payable under current liability under equity and liability. So this is a subhead, this is a main head, and this is a side. Okay, so this is the first video of accountancy. In the next video, I will give you the detailed information in each and every head. हर हेड में कौन कौन सा आइटम आता है
उस आइटम को आइडेंटिफाई करना एग्जाम में सबसे बड़ा कह सकते हो सबसे बड़ा थ्रेट्स होता है। और एग्जामिनेशन में एक दो नंबर के क्वेश्चंस इसी पे आते हैं कि फाइंड आउट कि ये आइटम किस हेड में रिकॉर्ड होगा। ओके, तो थैंक यू आज के लिए।